high standards, and inclusivity. This framework should drive a race to the top among the nations in the Indo-Pacific region. And I want to be clear that the framework will be open to others who wish to join in the future if they sign up and meet the goals and work to achieve those goals. I'm glad to have seen so many of you in person the past 2 weeks. At the U.S.-ASEAN Summit, I saw many of you in Washington, and during my travels to Asia, and I'm eager to hear from each of you today. I thank you for taking the time to be part of this framework launch, and let me close by saying the United States is deeply invested in the Indo-Pacific. We're committed for the long haul, ready to champion our vision for a positive future for the region, together with friends and partners, including the nations in this room and on the screen. It's a priority in our agenda, and we're going to keep working to make progress with all of you every day so that we can deliver real, concrete benefits for all our people. That's how I believe we will win the competition of the 21st century together. So thank all of you again for joining today, and I'll invite Prime Minister Kishida to say a few words now. Mr. Prime Minister. Thank you, Joe. Joe さん、ありがとうございます。President Biden of the United States of America and distinguished leaders, I sincerely welcome and strongly support the launch of the Indo-Pacific Economic Framework, IPEF, proposed by President Biden today in Japan. As President Biden mentioned just now, the Indo-Pacific region is home to half of the world's population and approximately 60% of the world's GDP. And it truly is the engine of global growth and vitality. Aiming to realize a free and open Indo-Pacific, Japan has been contributing to the stable prosperity of the region in cooperation with the United States and regional partners, focusing on 3 pillars, namely entrenching and strengthening fundamental values and principles, pursuing economic prosperity, and ensuring peace and stability. And tonight, the fact that President Biden is visiting Japan and announcing the launch of IPEF here is a clear demonstration of the United States' strong commitment to the region. I commend wholeheartedly President Biden for his strong leadership. Japan will join IPEF and work closely with the United States, ASEAN countries, and other regional partners to help create a new framework. In order for IPEF to be a meaningful framework for the regional economic order, it is important to address what we can among areas that are critical in participating countries and to have concrete outcomes. IPEF's focus on supply chain resilience, decarbonization, and clean तो ये आप देख रहे थे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च करते राष्ट्रपति बाइडेन, जिन्होंने कई बातों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस फ्रेमवर्क का मकसद रहेगा कि मुक्त और सुरक्षित इंडो पैसिफिक की एक तरह से लगातार वकालत लोग करते रहे हैं, तमाम देश कहते रहे हैं, उसी दिशा में इस फ्रेमवर्क के तहत अब काम किया जाएगा। सप्लाई चेन यानी आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत बनाना, हरित ऊर्जा की दिशा में काम करना, तमाम हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो सुरक्षित हो, मुक्त हो व्यापार के लिहाज से। और हम ये भी बता दें आपको कि ये एक आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिहाज से ये एक पहल की है अमेरिका ने, जिसमें 11 सदस्य देश हैं। और राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत साफ कहा कि भविष्य में आने वाले समय में अगर कुछ देश और जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं।
और आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं टोक्यो, जहां पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च करने के Japan respects the unity and centrality of ASEAN and will actively participate in the discussions in cooperation with the United States and other partners who are here today. We look forward to working together to build a more prosperous Indo-Pacific region by bringing together the initiatives and wisdoms of countries in the region, including the U.S.'s Indo-Pacific strategy, Japan's free and open Indo-Pacific, the ASEAN outlook on the Indo-Pacific, and India's Act East policy. IPEF is an inclusive and open framework that will remain open to the participation of new partners following its inception today. We welcome more partner countries to join IPEF discussions in the future. और इस मौके पर अपनी बात को रखते हुए जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने भी कहा कि तकरीबन 60% वैश्विक। मुझे खुशी हो रही है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस क्षेत्र को ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति की घोषणा है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री सभी को मेरा और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लॉन्च पर आपने देखा कि जिस तरह से राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी बातों को रखा, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने जिन बातों को रखा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को रखा, जिसमें उन्होंने बहुत साफ कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन इंडो पैसिफिक तय हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, निवेश का केंद्र भी इंडो पैसिफिक है। क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए एक फ्लेक्सिबल, उन्होंने कहा कि एक लचीलापन देखना होगा तमाम उन नीतियों में जो इस फ्रेमवर्क के तहत एक लचीलापन अपनाने की जरूरत है इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए। उन्होंने कहा कि और उसके 3 मूल मंत्र के तौर पर उन्होंने कहा कि आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और समय पे तमाम समाधान। उन्होंने ये भी कहा कि विकास, शांति और समृद्धि एक तरह से इसके आधार रहेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए, उन देशों के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए, आर्थिक चुनौतियों के समाधान को ढूंढने के लिए ये आधार रहेंगे तमाम देशों के बीच में, जिसकी की अहमियत पर उन्होंने जोर दिया। एक बार फिर रुख करते हैं टोक्यो का।
New Zealand warmly welcomes the Indo-Pacific Economic Framework as a strong signal of US investment in the economic future of our wider home region.